So, hi once. Good Yeah, evening. So, welcome to our podcast series 2. So, first we did with Aman, who is currently pursuing his articleship from video and yeah, area, which is also my favorite area, risk advisory. So, he's into that particular area. So, most welcome to our podcast series number 2. So, yeah. Hi, once sir. what we will do, we will keep this entire conversation. We will keep this entire conversation a very friendly way. So, people to understand दैट कि क्या लोगों को करना चाहिए जो जो अभी जिनके सीए इंटर के रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज होता क्या है ना कि हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या यू कैन दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्पिरेंट्स हम लोगों से सुनते हैं कि यार बिग फोर में जाना चाहिए, बट लोगों को ये भी नहीं पता कि अपार्ट फ्रॉम बिग फोर भी बाहर एक दुनिया है. एंड देयर आर लॉट ऑफ फर्म्स विच आर रियली डूइंग गुड बिजनेस, गुड हैविंग अ गुड वर्क लाइक अ बिग फोर. Yeah, Okay, so the thing is so once if you can quickly uh, just give me a walkthrough that when did you qualified your CA intermediate, then उसके बाद फिर आपने नांगिया ही क्यों चूज करा. Okay, yeah, and you just give us a brief in next to 1 or 2 minutes so that we can so that I can understand you very well that, and people who are listening this particular podcast they will also try to listen that what once did to get into the forensics. Okay, बट एक मुझे बताओ कि जब भी वंश ने सीए इंटर क्वालिफाई करा था उस समय वंश का जो थॉट प्रोसेस था वो यही था कि फॉरेंसिक में जाना है, या ही वाज जस्ट लाइक जंपिंग जहां पे भी मिल जाए वहां जाओ. yeah. So, नाउ ओवर टू. hi there. Yeah, okay. Yeah. So, hi, sir. This is Vansh. I'm like currently pursuing my articleship in forensic domain, as you said, in Nangia Co LLP. I qualified in May, in May 22. I cleared my group one in May 22 and my group two in November 22. So, as like I was like in regular college. I'm from Ramjas College, Delhi University. So Okay. because of that, I had to like delay my CA intermediate a bit, which was like I started my articleship in April 22, April 23 almost. Okay. Yeah. So at that time, as you have asked me, like what was my thought process? So actually, talking about me, I have this what I should call it like crazy mindset, which I was of this clear, like I had this clarity in mind that I should be in a domain which is a like non-traditional sort of. Like I wanted to be, everyone is going for stat audit, internal audit, or what we say like are the regular domains which like every articleship seeker is going into. So I had this mindset that I should be in एक ऐसी domain which is a bit non-traditional to everyone, and like whenever I get to explore this articleship is for me training and exploring how this CA field works, how this like after my post qualification I should be clear like which domain I have to work in. So Okay. that's why I chose this forensic. I tried for valuations also, which is also a non-traditional and a niche domain where Okay. not every articleship seeker tries for. So this is what my mindset was behind choosing forensics. And Okay. why, like as you asked, why I have chosen Nangia and Company as a uh, firm to be in forensic domain. It is because the Big Fours don't hire articles in this domain particularly. So after Big Four, it's BDO, GT, and then Nangia at number 7 in the top Yeah, yeah. ranking of. Okay, yeah. So that's why like there was hiring of Nangia. I didn't give interview in GT and BDO. Okay. I just gave interview for forensics in this Nangia and Company only. So I have, because like I had my friends already there, and their feedback was so like so good. They were so happy here like the learning they are getting, and I can second like their thoughts now also कि जो उनका mindset उस वक्त था जो उन्होंने मुझे feedback दिया. My feedback is also the same to anyone who is like asking me if I should join here or not. Okay. So let me just tell to the people who are not aware about that who are Nangia and company.
So Nangia and Company, basically, this is the global form of the Anderson. So if I can recall, so there's a very big firm, Arthur Anderson and Company LLP, which used to operate in India, correct? So Yeah. now that Arthur Anderson, that was shut down due to some of the reasons, but later on, Anderson Global, they have started their operation into India. And Nangia, one of the partner, I think, in my view, Yeah. he or she was from Arthur Anderson, correct? Yeah, actually, Nangia has partnered with Anderson Global as their like for getting global recognition. Okay. सो वंस मेरे को एक चीज ये बताओ, एक तो ये हो गया कि बिग फोर में आई कैन से दैट कि लोगों का एक थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि मैं काफी लोगों से बात करता हूँ। तो मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि तुमको आर्टिकलशिप में करना क्या है। लोगों का Hmm. एक जो है ना ड्रीम होता है कि मेरे को बस सर बिग फोर में जाना है, आप किसी में भी करा दो। बट आज Yeah. तक मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया कि इवन आई वाज आल्सो नॉट फ्रॉम बिग फोर। मेरी भी आर्टिकलशिप एकदम मिड साइज सीए फर्म से है, बट उसके बाद भी आई मैनेज टू गेट इनटू द बिग फोर विदाउट एनी डिफरेंस एंड ऑल। बट मेरे को जस्ट एक चीज ये बताओ कि तुमको ये नहीं लगा था कि मेरे को बिग फोर, अच्छा बिग फोर में तुम्हारा एक थॉट प्रोसेस था कि वहां पे फॉरेंसिक्स में आर्टिकल्स लेते ही नहीं है, दिस इज Yeah. क्वाइट करेक्ट टू द एक्सटेंट आई ऑल्सो नो दैट लाइक इन दे हायर फॉर आईए, बट फॉर द यू कैन से फॉरेंसिक्स वो किसी भी बिग फोर में लेती नहीं है आर्टिकल्स, दे ओनली EY हायर द hired सीए। for industrial trainee, I guess, a year ago. But I guess now also they don't hire industrial trainee as of now. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। So once, just tell me one thing. You also told that you have your own friends in the Nangia. Okay. So ये आपका जो कनेक्शंस होता है, सपोज अगर मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, बट लिंक्डइन पे मैं किसी से कनेक्ट हुआ जो नांगिया में काम कर रहा है, किसी भी फॉर्म में काम कर रहा है, वेदर दैट कनेक्शंस हेल्प समहाउ और हाउ इट इज। Yeah, for sure, sir. Jo connect all the connections that we have on even I don't know those people. I might like try to interact with them. I might engage with them via cold messaging them. So also like it's like kabhi bhi I get the message. I get a message from any strange person who is in my connections. They asked me for help regarding how should we get into articleship. I have also referred CVs which I've got on LinkedIn, not only of articles, of the CAs ओके, also. Like ओके, I have referred them to our firm and they have also joined for after a particular time. So ऐसा नहीं है कि we uh, if we don't know a person, we cannot like ask them for help. We can करेक्ट, ask, obviously they will, if they are having that capability to like refer us or something, like guide us to certain extent, they will obviously do that. But ओके, what one single mistake everyone does is like I get some messages from articleship seekers on LinkedIn. They are asking me for articleship opportunities in statutory audit domain or any other domain which I'm not associated with. So I can only help them in getting into forensic domain because I am a part of this forensic community of that particular firm now. So if they will ask me for getting articleship in statutory audit domain, obviously I can ask any of my other friends, but I won't do that because they have to get in direct contact with them now. Otherwise, it will करेक्ट। be my सो yeah, yeah, यस, 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 सो आई थिंक एक द गुड सजेशन व्हाट यू हैव टोल्ड कि अगर आपको जिस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो बेटर है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड सेक्टर या उस पर्टिकुलर सर्विसेज से रिलेटेड पर्सन से आप कनेक्ट हो, yeah, for एंड उनसे sure. आप बोलो कि मेरे को इस पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट है, तो आप मुझे इस डोमेन के लिए आप रिफर करो। And yes, Yeah, can understand because in the firm like Nangia or Big Four or Big Six or Big Ten, so they have their different organization structure. एंड उस केस में क्या होता है ना कि आप सारे, बिकॉज देयर सर्विसेज वाइज एचआर इज ऑल्सो डिफरेंट। जो yes, फॉरेंसिक की हायरिंग करता है उसका एचआर अलग होता है, जो स्टार्ट की करता है वो उसका एचआर अलग होता है, जो आईए की करता है उसका एचआर अलग होता है। सो आई थिंक दिस yeah. इज वन ऑफ द गुड सजेशन। सो द नेक्स्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आपने सोचा कि अब मेरे को जाना है फॉरेंसिक्स में, ओके, एंड तो इस केस में क्या आपका एग्जाम का अटेम्प्ट मैटर करता है? फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड पीपल आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड, एंड सेकंड थिंग विल
then get back on the questions that what probable questions they have asked. So first of all, मेरे को अब ये जो पहला क्वेश्चन है मेरा, बिकॉज मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो अटेम्प्ट मैटर करता है कि नहीं करता है. So, at article level, attempts, I would like bluntly say they don't matter in forensics domain. That is what I have seen. Because we have like conducted interviews of almost like 20 to 30 articles in last 6 months only. We have like analyzed the CV and we totally ignore. Like obviously, if there are 3 to 4 attempts, I would say like I would not prefer that person much. But yeah, if there is only one attempt or two attempt, we don't like we totally ignore that thing and we focus on the other things which are other than academic things or what it has done to be in this domain. Like for example, there's a course regarding forensic audit on Coursera only. So there are some candidates which we receive, they have done that course. Obviously, if there are like 1 or 2 attempts और उसने साथ में forensic audit का Coursera पे course किया है, तो why would I like choose him? Attempts don't matter in that case, ना? Yeah. Yeah, सो एक चीज है कि आप एक या दो अटेम्प्ट हो गया तो ठीक है, मतलब पीपल नॉर्मली इग्नोर कि यार ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. बट इफ यू yeah, आर हैविंग और एनी कैंडिडेट इज हैविंग 3 attempt, 4 attempt, you can say still 3 attempt is manageable, but 4 attempt, 5 attempt, 6 attempt, it definitely creates some doubt on your capability. I'll not say that you are not capable, बट एस वो जो एक फर्स्ट आईव्यू में होता है ना कि जब एचआर आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट करता है तो उसका पहला प्रेफरेंस होता है कि भाई जो टॉप कैंडिडेट होंगे उनको हम लेंगे. अगर उसके बाद भी उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती, देन दे कम बाई प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3. yeah, exactly. सो वंस सो आपका इंटरव्यू कैसे हुआ था, मतलब पहले एचआर राउंड हुआ था, देन टेक्निकल राउंड हुआ था, एंड देन यू जस्ट एक्सप्लेन कि व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड. Okay, so I'll tell you what type of like what is the whole the interview process right now at our forensic domain. So what happens is first you will get a telephonic interview, like you will get a call over telephone. We'll like judge you based upon how you are communicating to us and how we will ask you a certain 1 to 2 technical questions only. So But who will ask? like Who will ask? Whether HR or forensic people or who? actually, we don't at article level only internal hiring is there. So any person from internal department is only there to call you. So he Okay. will like judge you according if you are actually interested in this domain and how you like how you are communicating over the call. If you are confident enough over the call, you will get a surely get a selection for the next round. That is the consultant level round or what we say at the technical round, which is your most important round. At this level, you like nowadays, what I have seen is ki interview is really difficult. The level of interviewer, like as we are getting 20 to 30 applications just to fill 1 or 2 vacancies, we have to like make this a bit difficult for them. So Okay. as forensics, like first thing that is checked upon on that interview round is your interest in forensics. It's not like you have just applied for the sake of applying. बट कैसे Your पता चलता, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हमको कैसे पता yeah. चलेगा कि या जब आप लेते हो किसी को शॉर्टलिस्ट करते हो तो हाउ यू आइडेंटिफाई कि यार सामने वाले को इंटरेस्ट है फॉरेंसिक्स में. So, sir, it's like na ki if I am interested in a particular thing, I will try to get as as much as knowledge as I can like grab from the internet. Jitna knowledge Correct. I can get, I'll get. Somehow will like connect with people from the organization, ask them कि interview के अंदर क्या क्या होता है, and I'll like try to like जैसे I said कि एक कोर्स है Coursera पे which is on available on public domain. So बच्चे आते हैं like articles आते हैं जो already इसको कर चुके हैं. So that Correct. shows कि आपका interest एक domain के अंदर है. Because forensics is like a like very different from other domains. So we test how analytical you are here. Like you need to you will get repetitive work here. Obviously, या तो हर field के अंदर होता है. You will get monotonous or tedious work, but mostly the work is analytical on your part. You'll get a like responsible job यहाँ पर, which you need to like अपने आप से ही खुद ही सोचना पड़ता है कि क्या इसके अंदर करना है.
you will obviously will get grooming from the seniors, but at Correct. first level you have to understand the data and analyze it on your own and try to find a solution. So ओके, that सो analytical इन mind नटसेल, is checked. यस, सो मैं जो समझ पा रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आपको जिस भी डोमेन में जाना है, it is better to gain some prior understanding. Someone is not expecting that you will know each and everything, but at least a basic fair idea that what particular domain is, और उस डोमेन में क्या क्या काम होते हैं, उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी। जैसे फॉरेंसिक्स है तो आपको फ्रॉड रिलेटेड इवन ये भी पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं। एंड विद lot of stuff like you rightly said कि Coursera हो गया, Udemy हो गया, मतलब I think these are the basic courses at a very small cost, 200, 300, 400 rupees, and I think this is one of the good suggestion. And what type of questions you rightly said कि जैसे and इस केस में जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपके पास में जो ट्रेडिशनल फील्ड वाली वैकेंसीज होती हैं वो आपको कम मिलेंगी यहाँ पे, बिकॉज वो आर्टिकलशिप में एक तो लोग कम होते हैं बिकॉज ऑलरेडी दे प्रीफर कि हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाए। बट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू पीपल आस्क? So, like, sir, यहाँ पे कोई there's no rigid list of questions I can like tell you कि आप बस ये prepare कर लो, you will get like clear the interview. क्योंकि it's like a very vast domain. We जो भी projects we get, we have to get like we have to completely check overall, as in like सारे के सारे aspects check हो जाते हैं. So you need to have like जितना भी आपका इंटर का syllabus है, we can check upon any of the topic, any of corner we can like check upon कि आपको वो कितना आता है कितना नहीं आता. And apart from that, I'll give you an example. So I was like seeing one interview of article only. So there was certain conversation about TDS and GST was going on between the like interviewer and interviewee. So he was like giving answers regarding जो भी सर ने क्वेश्चंस पूछे regarding GST, TDS sections कितना percentage होता है and all. He was asked like he was correctly giving those answers exactly from the like जो भी हमारा technical knowledge होती he was correct on that. But then to check upon how he can like analyze and how he can like develop a new thing which जो उसने आज तक नहीं पढ़ी हो. So my like senior asked him कि why was TDS introduced in India. So that is something you have to like make up the answer. You know, everyone like we are in this. You have cleared CA intermediate. You must know कि TDS क्यों आया था इंडिया के अंदर और पता भी होगा. But उस बिल्कुल। time पे you have to make up the answer and to give a satisfactory answer to the interviewer कि वो TDS क्यों आया था. वो एक चीज होती है जो चेक की जाती है at the time of तो the interview. बेसिकली आप ये कह रहे हो कि उस समय इंटरव्यूअर क्या करता है ना, वो आपके थॉट प्रोसेस को देखता है कि सिंस अगर आपको रेडीमेड आंसर्स नहीं पता है, बट वेदर यू आर एबल टू अप्लाई योर थॉट प्रोसेस, अप्लाई योर माइंड, या किस एक्सटेंट तक आप सोच सकते हो। अब जैसे Yeah, कुछ लोग होते हैं ना कि दे आर टोटली बुक इज पीपल, कि उनसे जो yeah. तुमने बुक के बाहर पूछा तो वो उससे बाहर वो अपना माइंड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। Hmm. बट यहाँ पे मतलब व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि द पर्पस ऑफ इंटरव्यूअर इज जस्ट टू सी वेदर यू आर एबल टू अप्लाई योर थॉट प्रोसेस। ऐसा तो नहीं कि मतलब जो बुक में लिखा है कि हाँ टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर के केस में कितना होगा, सैलरी के केस में कितना होगा। एंड बट द मेजर थिंग व्हाट यू राइटली सेड कि जैसे क्वेश्चन है कि भाई टीडीएस इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, तो ये चीजें तो कॉमन सबको, टीचर आप कोई भी क्लासेस में जाओगे तो आपको ये चीजें बेसिक पता ही होंगी। Hmm. या गो, प्लीज गो ऑन। Yeah, actually I miss. Okay, so these type of questions. So you are saying that ki there is no such set of questions, but yes, interviewer will always think from the perspective कि भाई आप अपना mind apply कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। Yeah, for sure. एंड ये टोटल, अगर मैं बात करूँ कि जैसे नांगिया में एक टोटल हायरिंग का जो प्रोसेस है, व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम, मतलब अगर सपोज किसी ने अप्लाई करा एंड अगर उसको एक्सपेक्टेशन है कि मेरा 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, सो व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम, मतलब कितनी जल्दी पता चलता है? सेम आई वुड से कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पर, बट या इट्स 10 to 15 days इज मिनिमम, क्योंकि द अमाउंट ऑफ सीवीज वी गेट इज लाइक 20 to 30 फॉर जस्ट 2 to 3 वैकेंसीज. तो उसके अंदर एक टाइम लगता है. एंड द प्रोसेस इज कि फर्स्ट यू विल गेट अ टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड देन देर इज अ technical interview, and then there's a managerial level interview where he will like check upon how you're interested into this domain or you will join surely
एंड हाउ आर लाइक यू, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक एज ए मीडियम कि आप बस नेम के लिए आ रहे हो यहाँ पर। Okay. तो वो एक लंबा प्रोसेस है एंड वो कंप्लीट होता है तो 10 to 15 days इज मिनिमम जो वेट करना पड़ेगा। Okay. 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 So is there any partner role? So like in some of the big four, sometimes there is a cases of partner round, but sometimes it all depends upon the director or manager that whether partner round is required or not. But in your case or in the Nangia, what is the process? Is the manager or As of senior? now, yeah. Yeah, as of now, at article level, there is no partner or director round. There's just a manager level. Okay, okay, okay. What three suggestions you will give to the aspirants who will qualify in this particular July, and they will seek for opportunities in any of the firm for the forensics? So, what are the three suggestions as per you is required whenever you want to go for this forensic services articleship? Okay. So, first of all, it is कि आपको brush up करना पड़ेगा each and every concept which is related to like audit. Obviously, like as an audit, as in what we like, जो भी checks हमारे audits के अंदर होते हैं, where it is TDS checks, GST checks, like every concept you have to brush it up. First thing. Second is कि you have to develop an interest. Obviously, interest is the first thing that is checked upon आपके interview के अंदर. If you are actually interested in is this domain या नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, यू आर जस्ट लाइक फॉरेंसिक्स है, फ्रॉड होता है, बस इतना पता है, तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। यू मस्ट नो कि क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या क्या एक अम्ब्रेला के अंदर, इस फॉरेंसिक्स के अंदर किस टाइप के असाइनमेंट्स होते हैं, कि क्यों कराया जाता है फॉरेंसिक्स, कौन कराता है फॉरेंसिक्स, लाइक क्या क्या इसके अंदर है, वो सब आपको एक डिटेल के अंदर आपको एटलीस्ट एक ऊपर ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या और क्यों क्यों होता है, ताकि आपका इंटरेस्ट शो कर सको आप। एंड द थर्ड Okay, थिंग इज द एनालिटिकल माइंड, वो आपको एक अपना लेवल पे डेवलप करना होगा। that is very important. So, क्या Yeah. आप क्या forensic services का जब भी इंटरव्यूज होते हैं, so like in the IA or stats, sometimes we give some data to the articles or to the interviewee कि भाई तुम इस केस में मेरे को ये एक्सेल पे ये एनालिसिस परफॉर्म करके दो। जैसे हमने बोला कि भाई तुम इफ का फॉर्मूला लगाओ या वी लुकअप के फॉर्मूला लगाओ। डू वी ऑल्सो चेक ऑन दीज पर्टिकुलर पार्ट और वी जस्ट आस्क कि हाउ यू रेट योरसेल्फ इन MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड ऑल? No, sir. Like, ratings is asked. If you have given you a 5 out of 5, then you are like, you should expect you have to be like grilled upon in the next 15 to 20 minutes. Because ओके, you have given you 5 stars, so you must know each and everything कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। भी ओके, आपको पूछा भी जा सकता है कि ये आपके पास डेटा सेट है, आप अप्लाई करके दिखाओ, सोल्यूशन ये है, कैसे प्रोसेस होगा। एटलीस्ट कोई प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए कि कैसे आप उस सोल्यूशन तक पहुंचोगे। ओके, ओके। So I think it was nice, and if I can summarize in nutshell, so there are three to four things which is very important. So first of all, attempt does not matter, but disclaimer is if you are having four attempt, five attempt, or six attempt, then it will definitely matters a lot. This is first thing, and second thing, your communication skill, your confidence, and your analytical mind. How you can apply your mind into some thought process, that is very important. The third part is whatever the concept you read into your CA inter audit, you should just go and brush up these concepts that from the overview design level, or you can say helicopter or high level view. The third thing is this, and fourth thing, be real. So don't tell anything which you don't know, that कि आपने बोल दिया कि हाँ मेरे को ये पता है। समटाइम्स होता है क्या, कुछ लोग अपनी हॉबीज में जाते हैं, बोलते हैं हाँ सर मेरी ये हॉबीज है बुक रीडिंग, एंड समटाइम पीपल आस्क विच टाइप ऑफ बुक यू रेड, तो उस टाइम पे वो गोल हो जाते हैं। सो आई थिंक एंड द लास्ट थिंग इज दैट कनेक्शंस। सो कनेक्शंस डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट, मैं ये भी मानता हूँ कि कनेक्शंस मैटर करता है, बट यस, द कनेक्शंस, इफ यू कनेक्ट विद द connections, if you connect with the right people in which you are interested, in the sectors which you are interested, I think these four to five things are very important. So thanks once. I think it was a nice conversation with you, and people will definitely help after help will get a help, lot of help, and I can also assure you will get a lot of calls over the LinkedIn. You will get a connection request कि please आप मेरे को refer कर दो.
So I will expect that, yes, how we are CA Gurukul or me or member as a whole expecting helping people. So definitely I'll expect, and it is my request that to the extent it is possible, we should support to the people. But yes, again, my request is this, कि please connect to the right people only, rather than कि भाई नांगिया में या KPMG में या PwC में किसी को भी आप कनेक्शन भेज दो और उससे बोलो कि सर आप मेरा CV फॉरवर्ड कर दो किसी भी सर्विसेज में. So I think it's a very good conversation, and thank you so much for coming on to my podcast, and we'll definitely look forward up to you. Yeah. Thank Thank you you, so much. Vansh. It's been an honor to be present here. Thank you. Bye bye. Same here. Yeah. Thank you.